Hello friends, Namaskar, very warm welcome to Rainbow Learn to Use series with SD. मैं हूं SD शानंद उदास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट. ये जो वीडियो है इस वीडियो विल बी अ मिक्स ऑफ थोड़ा हिंदी, some English, a mix of Hindi and English. So English will be the language. For greater reach, this will be a sole discussion on our ऑप्शन मास्टर टूल, द लेटेस्ट एडवांसमेंट जो हुआ है उसमें. एंड दिस इज meant for largely those who use this setup. उनको काफी हेल्प होने वाला है. Sometimes these updates come in between classes, तो क्लास के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता to go through the explanation. So let me start. Basically, we start with Nifty, and this is meant for option trading. And largely, I prefer to do the option trading in 125 minutes. Though I have traded other time frame as well. And when there is an update, कैसे आपको update करना है कि आपके chart में, if you have the indicator on chart, उसको remove from chart, like this way, remove, and now again go fresh to indicator. आपको ये special indicators you will get under invite only. Apply the asset master, which is V1, SD Rainbow Wave V1. Apply. And you want to apply the SD Rainbow Wave option. Apply. Now don't apply them together, so I don't need the asset master right now. What I will do is the option master. First of all, once again, let me remove the option master and try again to show you the settings. Option, this setting come up. ये रहा जिसके जरिए you can select the meters. Credit spread, sell करके option game के लिए. You have debit spread, option buy करके game के लिए. Neutral spread is non-directional trade. Strategy table is to look at market का view on different strategies. Premium charts to apply on option premium chart. Straddle strangle to apply on strategy chart. Option table size you can increase. I'm keeping it auto, and I'm choosing the main motherboard, which is the options. Strategy meter I want off right now. I don't want to look at the strategy meter off. It can be used via strategy table as well. Now option expiry day you have to fix for the strategy meter. Otherwise, for credit spread, debit spread, neutral spread, this just has to be any valid expiry. अगर expiry valid नहीं है, let me try 27, and the indicator will not apply. You won't be able to apply. See, it is not applying. There is an error. The error is coming because I have put the expiry wrong. So 28th October, if you want to say next week, you'll have to change it to the next week. For strategy table or strategy table के, not option या credit spread and debit spread. So इनके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं. Only for the strategy table. Now, below that, there are at the money strike. When you select it correctly, then only you get the reading for right readings. There is analytical table. ये रहा left on side में analytical table. This is the analytical table. Probability table एकदम top पे दिखा रहा है. This is the probability table. Next one. Strength table. This is not visible during the option, but if I take credit spread, there will be a table coming lower on the lower side, and I have to make sure that the strength table is on. So a strength table which will show the main index's strength, but if you want, you can change it. You can change it completely to put some other details.
Like you can choose, say, Reliance. Let me choose Nifty 1 ke jagah. Let me choose Reliance. Reliance Industry. You can apply the normal regular stock, or you can have, say, Reliance is rising. So you can choose as you see fit. So what I will start with, the main motherboard, the option. And the strategy meter, I'll have to change the expiry date correct on 28. And personally, I prefer to trade the index, that is the Nifty. And Nifty currently, what the trades are going on, पहले आपको दिखा रहा है main meter में the buy trades that are there. Bull call spread buy करके खेलना. Then strike is suggested for those aggressive player as well as defensive players. ATM buy at the money strike आप buy करेंगे and 2x 3x spread और 5x spread के साथ खेलेंगे. X can be at currently 50 to 100. स्ट्राइक सजेस्ट किया जा रहा है अगर आप खेलना चाहेंगे डिफेंसिव वे द बुल कॉल स्प्रेड, आप एक सेफ्टी लेवल चूज करेंगे बेस्ड ऑन द रेनबो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस इन द मनी लेवल एंड 1x स्प्रेड के साथ you will remain bullish on Nifty. नेक्स्ट जो पैरामीटर, आई कैन मेक इट बिगर, अगर आप सब लोग देख पाए क्लियरली, लेट मी मेक इट बिगर ऑन दिस वन. जो मेन ऑप्शन मास्टर का जो मेन टेबल, उसको आई हैव ट्राइड इंक्रीजिंग द साइज. सो या, साइज हैज इंक्रीज्ड. सो बेसिकली द फर्स्ट 3 सिग्नल्स आर टू बाय करके गेम. Next 3 signals are option selling style. So currently we are selling bull put spread. So bear call का कोई level suggest नहीं किया जा रहा है. These are suggested level, but these are indicative level, absolute नहीं. आप इनमें से चूज कर सकते हैं या तो रेनबो अंडरस्टैंडिंग के साथ चूज कर सकते हैं. Obviously 25,000 close. सो आप अगर सेफ्टी रखना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायर्ड रिटर्न, यू कैन रिमेन फार अवे. सो नेक्स्ट वन जो लेटेस्ट एडिशन किया गया है, दोज आर, कैन आई स्टार्ट अ रेंज ट्रेड? नो, करंटली बोला जा रहा है बेटर वेट इट आउट. कोई एक रेंज ट्रेड, यानी जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्डोर और मे बी बटरफ्लाई और strangle, these are examples of some range strategies. Currently it is mentioned कि not a very good entry point. साथ में जो नया एडिशन है, that is the volatility level. Volatility level is currently the low volatility, whereas RV यानी realized volatility, जो एक्चुअल में हम लोग फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, that is lower compared to the historical. Normally जो फ्लक्चुएशन निफ्टी में होता है, यूजुअली उससे कम है. सो ओवरऑल इस ये दो काम में आता है कि व्हेन द लो वोलेटिलिटी, हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्प्रेड नहीं बनाते, बिकॉज ऑन द बाय साइड निफ्टी विल मे राइज स्लोली. एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब एक मेजर मार्केट टर्न अराउंड आता है या रेंज हो गया, उसके बाद यूजुअली ट्रेंड चेंज के अराउंड द ट्रेंड चेंज हाई वोलेटिलिटी वी यूजुअली विटनेस. तो ये एक वार्निंग है आप लोगों के लिए कि कौन सा फेज ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है नॉर्मल से, एंड कब हिस्टोरिकल से वो कम फ्लक्चुएट हो रहा है. सो बेसिकली लो वोलेटिलिटी अभी करंट फेज चल रहा है. और लो वोलेटिलिटी का एक अच्छा बात ये है कि व्हेन द लो वोलेटिलिटी इज देयर, यूजुअली जो ट्रेंड चल रहा है दैट टेंड्स टू कंटिन्यू. सो मतलब अभी भी और हम लोग और भी बुलिशी कंटिन्यूएशन पॉसिबली देखते रहेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट मेन मीटर. अब इसको हम लोग और डिटेल कर सकते हैं. वी कैन गो इनटू डिटेल बाय गोइंग इनटू द सेटिंग एंड सिलेक्टिंग से क्रेडिट स्प्रेड.
क्रेडिट स्प्रेड एनालिटिक्स मीटर इज देयर, जो बेसिकली मार्केट का लॉन्ग मीडियम शॉर्ट ट्रेंड दे रहा है. फॉर डिटेल्स ऑन दिस रेफर टू अदर रेनबो सेशंस. LT, MT, ST, all three are bullish and price action is bullish too. So currently जो दिख रहा है ऑप्शन शॉर्ट ट्रेड, हम लोग पहले भी देख रहे थे, पुट सेल करके काम हो रहा. इन द मनी ऑप्शन अभी एज ए सेल नहीं कर रहे. स्ट्राइक सजेशन इज रेनबो लेवल के बेसिस पे जो क्लास में कवर किया गया है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द रेनबो लेवल. सो आई विल ड्रॉ एक्सपायरीज, say a vertical line. Next expiry is on 28th. So this is looks like a strong level. So 750 to 650 I can create a spread. Current strike suggestion में एक से suggest किया जा रहा है 50 to 100. और बुल पुट का suggested level भी दिया गया है, जो सारे लेवल पे आप अच्छा कर सकते हैं. Try to do well. So overall एक बुलिश माहौल है, वो तो क्लियरली दिख रहा है. एंड दीज आर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो इन दिस वन वी हैव एडेड द एक्स वैल्यू एज वेल एज मेड द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स. वेरी मेन जो लेवल्स है जिसके आप नीचे रहना पसंद करेंगे, दे आर वेरी वेरी क्लियरली लेड आउट. नाउ द नेक्स्ट वन इज द डेबिट स्प्रेड. Oh, just a moment. क्रेडिट स्प्रेड में यहाँ पे 3 सिग्नल, these are not new but 3 सिग्नल आ रहे. As long as signals are there, you can continue to do the bull put spread. अगर सिग्नल चेंज हुआ तो आप आपका गेम भी चेंज कर सकते. Very pretty simple way to do it. But psychology portion भारी पड़ेगा. That is, you have to improve. बिना साइकोलॉजी सिग्नल के साथ बिकमिंग सक्सेसफुल विल नॉट बी इनफ. साइकोलॉजी प्लस सिग्नल एंड अदर अंडरस्टैंडिंग. नाउ डेबिट स्प्रेड यानी बाय करके खेलना, दैट इज बुल कॉल चल रहा है. लो वोलेटिलिटी, सिमिलर रीडिंग बट स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे हम लोग एट द मनी यानी करंट एट द मनी विल बी 25,100 और उसका 2x 3x स्प्रेड वी कैन क्रिएट. So overall निफ्टी का बुलिश माहौल है इन द 125 मिनट्स चार्ट. एंड लार्जली हम लोग बाई साइड में कॉल बाई करके खेल रहे हैं. नाउ इज द न्यूट्रल स्प्रेड, दैट इज द न्यू एडिशन. न्यूट्रल स्प्रेड इज द न्यू एडिशन. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट स्ट्रैंगल 1 ALT मतलब ऑल टाइम. एक स्ट्रैंगल एक ऐसा है गेम है लाइक विच यू कैन कंटिन्यूअसली डू, because even if market is trending in some time frame it could be rangy. और जब तक रेंज है, like for example bigger time frame, it is entry can be still done on an important level. हम लोग स्ट्रैंगल बना सकते हैं. जब हम लोग वीकली चार्ट चूज करते हैं, then up to 3 months expiry we can choose, and based on our risk level we can create the spread. एंड करंटली बोला जा रहा है थोड़ा डिफेंसिव रहने के लिए, नॉट वेरी एग्रेसिव ऑन द स्ट्रैंगल्स, लिटिल बिट ऑफ डिफेंसिव रहने के लिए बोला जा रहा है. नाउ वी आर ऑन द डेली चार्ट में. अगर आप डेली चार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, लार्जली डेली चार्ट इज मेंट फॉर मैक्सिमम 1 month एक्सपायरी. मतलब आज 21st है, सो 21st टिल द नेक्स्ट 25 जो एक्सपायरी लिक्विड है, आप वहां तक जा सकते हैं. दीज आर रेगुलर इनकम स्ट्रेटेजीज. लेट्स अंडरस्टैंड कि नीचे का क्या क्या आ रहा है. फर्स्ट वन इज ऑल टाइम, जो स्ट्रैंगल दैट इज ऑल टाइम कैन बी डन, बट वहां पे हम लोग नोटिस करते हैं कैन इज दिस अ गुड एंट्री टाइम. अगर कोई भी सिग्नल क्लोजिंग डेली देख रहे हैं, मतलब आज डेली दिन का 3:30 मतलब 3 बजे से 3:30 3 to 3:30, if the signal is there that means signal is valid. So slightly before 3:30 you can initiate the trade.
But when there is defensive, you try to remain smaller quantity overall compared to the aggressive time when entering. And when doing strangle, you generally prefer a low volatility environment. So when the volatility is also high, try to be defensive as well. Next is option master, the strategy table. For example, say next expiry strategy table I have selected, and next expiry I'm interested which strategies are currently going well. So I'll increase it, make it properly to at the money 25,100. I want the 28th of August, so I'll change the month, expiry month, and expiry year 28th August 2025. This ignore this type of option call or put, we have to ignore it. And largely market से जो reading आ रहा है currently, that is on the vertical spread. Largely जो call suggested है currently is the bull call spread, यानी 28 तारीख तक थोड़ा bullish माहौल रहने का ही लग रहा है. पुट का सजेशन नहीं है, बट बुल पुट यानी पुट बेच के खेलने का काम बताया जा रहा है. बियर कॉल यानी कॉल के साइड गेम लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है. नाउ इफ आई चेंज इट टू ऑप्शंस and now switch on the strategy on, I can now see better the strategies with the vertical spread. This is the vertical spread. Success chance is showing for more bull side trades. And now if I choose more income strategies, so currently it is showing yes short straddle far away nahi, but short straddle abhi bhi या short strangle, these are remains profitable. So overall जो that's इसीलिए मैं बोल रहा था कि all time strangle, this neutral strategies can be majority times it can be done if the spread is proper. अगर गैप आप सही ले रहे हैं तो यूजुअली कोई भी टाइम पे किया जा सकता है, बट आप मेरे सिग्नल के साथ और श्योर हो सकता है एटलीस्ट एंट्री करे राइट कैंडल है या नहीं. बट उसके साथ साथ इफ यू लुक एट द प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल्सो अदर, देन यू विल पॉसिबली बी बेटर ऑफ. तो क्लियरली ये सारे अपडेट के साथ आई विल सजेस्ट द सेटअप हैज बिकम मोर पावरफुल. और भी अपडेट्स बाकी हैं बट दे विल कम. नाउ आई थिंक हम लोग एक अच्छा लेवल पे पहुंचे. So we will possibly see again the updates coming on around later part of the year, possibly around November, December onwards, because currently हम लोग का update आएगा on the SIP master as well as the asset master. So I hope overall जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा ऑप्शन मास्टर, you are enjoying and अच्छा रिटर्न आ रहा है. that I can easily understand from your message that many of you are interested in doing the trades. So overall, let's look at the last final reading on the option before I close off. Let's look at the reading, main option reading. So it's once again clear. Current strategy is more on the bullish side. So bull call side, the strategy is maintaining VR. Bull put side, we are maintaining. All the best to you, my friends, in this trading journey. Best wishes from my side. And as always, happy trading.